The world is your home, Lord, our heart is your home. A heart full of love, Lord, my heart is your home. We are the children, children of Sai. 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 Satya, Dharma, Shanti, Prema, Ahimsa. Love all, serve all is your call. Love if you can, hurt no one in despair. For you are the Father and we are the children, children of Sai. 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 Kali Yuga Deva Avatara. You have come to guide us all. Sachidananda Avatara. Guide us all, lead us all. Guide us all, lead us all. We are the children, children of Sai. We are the children, children of Sai. Kali Yuga Deva Avatara. We love you, Father, show us the way. Sachidananda Avatara. We love you, Mother, show us the way. We love you, Mother, show us the way. Deva Avatara, Sachidananda Avatara. Kali Yuga Deva Avatara, Sachidananda Avatara. We are the children, children of Sai. We are the children, children of Sai. Kali Yuga Deva Avatara, Sachidananda Avatara. Kali Yuga Deva Avatara, Sachidananda Avatara. Children of Sai. Sachidananda Avatara. We are the children, children of Sai. We are the children, children of Sai. गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। ॐ नमो भगवते रुद्राय। ॐ नमस्ते रुद्रमण्यव उतोत इषवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः। यात इषुः शिवतमा शिवं बभूवते धनुः। शिवा शरव्यायातवतया नो रुद्रमृडया। याते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी।
तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः यामिषुं गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवाङ्गिरित्रतां कुरु माहि गुंसेः पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावदामसे यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असत् अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अहेगश्च सर्वाञ्जम्भयन् सर्वाश्च यातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिता सहस्रशो वैशागुं हेडयेमहे असव्यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयाति नः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अथो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरात्नियोर्जाम् याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वप अवतत्यधनुस्त्वगुं सहस्राक्षशते शुधे निशीर्य शल्याणां मुखा शिवो नः सुमना भव विज्यं धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उत अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः याते हेतुर्मीढुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधाय नातताय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणत्तु विश्वतः अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निधेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्मिञ्जराय त्विषीमते पथीनां पतये नमो नमो बभ्रुषाय व्याधिनेन्नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तताविने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नम उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्रीणां पतये नमो नमः कृत्स्नवेताय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमः
ककुभाय निषङ्गिणे स्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्तायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः श्रुकाविभ्यो जिघागुंसद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमोऽसिमद्भ्यो नक्तं चरद्भ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नम उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नम इषुमद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नम आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नम आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नम आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्योऽश्वपतिभ्यश्च वो नमः नम आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमो नम उगणाभ्यस्त्रिगुंहतेभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रुभ्यः सङ्ग्रहेतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षद्भ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नम इषुकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युप्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमो मेढुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृध्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे चाजिराय च नमः शीघ्र्याय च शेभ्याय च नमः ऊर्म्याय चावस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय च नमो जघन्याय च बुद्ध्याय च नमः सोऽभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः
आशुषेणाय चाशुरथाय च नमः शूराय चावबिन्दते च नमो वर्मिणे च वरूथिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिणे चेषुधिमते च नमस्तीक्ष्णेशवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सोद्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय च वट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईध्र्याय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च रुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नम उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आतार्याय च लाद्याय च नमः शष्प्याय च फेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नम इरण्याय च प्रपथ्याय च नमः किगुंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेश्प्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्म्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमोपगुरमाणाय च भिघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमो वः किरिकेभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नम आनिर्हतेभ्यो नम आमीवत्केभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रन्नीललोहिता येषां पुरुषाणामेषां पशूनां माभेर्मा रोमो येषां किञ्चनाममत् या ते रुद्रशिवा तनो शिवा विश्वाह भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृडजीवसे इमागुं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वेराय प्रभरामहे मतिम् यथा नः शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रो तनो मयस्कृधि क्षयद्वेराय नमसा विधेमते यच्छञ्च योश्च मनुरायजे पिता तदश्याम तव रुद्रः प्रणीतो
मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितम् मानो वधेः पितरं मोत मातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोकेतनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वधेर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आरात्ते गोघ्न उत पूरुषघ्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मे ते अस्तु रक्षा च नो अधि च देव ब्रूह्यधा च न शर्म यच्छद्विबर्हाः तुहि श्रुतं गर्तसदंयुवानं मृगन्न भीममुपहक्तृमुग्रम् मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतर्वृणत्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरा मघवद्भ्यस्तनुष्वमेढ्वस्तोकायतनयाय मृडया मेढुष्टमशिवतमशिवो नः सुमना भवा परमे वृक्ष आयुधन् निधाय कृत्तिं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागहि विकिरितविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयोऽन्यमस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृधे सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम् तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसे अस्मिन्महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवा शितिकण्ठा शर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवा शितिकण्ठा दिवगुं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पथां पथि रक्षय ऐलभृदायव्युधः ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रुकावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसे नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षमिषभस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणादश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु तेयं द्विष्मो यश्च नो द्वेष्टितं वोजम्भे दधामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्योमर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः
तेनान्येनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि तमुष्टुहि यस्विषुः सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वा महेशो मनसाय रुद्रं नमोभिर्देवमसुरन्दुवस्य अयं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेषजो यगुं शिवाभिमर्शनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मेऽनुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे सोश्च मे प्रसोश्च मे सीरं च मे लयश्च मरुतं च मे मृतं च मे यक्ष्मं च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे न मित्रं च मे भयं च मे सुगं च मे शयनं च मे सुषा च मे सुदिनं च मे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः मंगलदायक हे गणनाथ मंगलदायक हे गणनाथ मंगलदायक हे गणनाथ मंगलदायक हे गणनाथ प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा हे शिवनंदन पाहि दयाला शिवनंदन पाहि दयाला हे शिवनंदन पाहि दयाला शिवनंदन
स्वरूपा विघ्न विनाशा प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा मंगलदायक हे गणनाथा प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा हे शिवनंदन पाहि दयाळा पर्तिपुरीश्वर जगत परिपाला प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा मंगलदायक हे गणनाथा जय गुरु साई राम जय गुरु साई राम जय गुरु साई राम जय गुरु साई राम जगद्गुरु सत्य साई राम जगद्गुरु सत्य साई राम जगद्गुरु सत्य साई राम जगद्गुरु सत्य साई राम जय गुरु साई राम जय गुरु साई राम ब्रह्म विष्णु शिव 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 साई राम पर ब्रह्म रूप 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 साई राम माता पिता गुरु 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 साई राम जगद्गुरु सत्य साई राम जगद्गुरु सत्य साई राम जगद्गुरु सत्य साई राम जगद्गुरु सत्य साई राम जय गुरु साई राम जय गुरु साई राम जगद्गुरु सत्य साई राम जगद्गुरु सत्य साई राम जय गुरु साई राम जय गुरु साई राम ब्रह्म विष्णु शिव साई राम ब्रह्म विष्णु शिव साई राम पर ब्रह्म रूप साई राम पर ब्रह्म रूप साई राम माता पिता गुरु साई राम माता पिता गुरु साई राम जगद्गुरु सत्य साई राम जगद्गुरु सत्य साई राम जगद्गुरु सत्य साई राम जगद्गुरु सत्य साई राम जय गुरु साई राम
महाकाली कपालिनी काली महाकाली कपालिनी काली काली महाकाली कपालिनी काली महाकाली कपालिनी दुर्गा दुर्गा देवी दुर्गा भवानी 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 काली काली महाकाली कपालिनी काली काली महाकाली कपालिनी मंगल गौरी माता महेश्वरी मंगल गौरी माता महेश्वरी मंगल गौरी माता महेश्वरी मंगल गौरी माता महेश्वरी राज राजेश्वरी लक्ष्मी नारायणी राज राजेश्वरी लक्ष्मी नारायणी राज राजेश्वरी लक्ष्मी नारायणी राज राजेश्वरी लक्ष्मी नारायणी काली काली महाकाली कपालिनी काली महाकाली कपालिनी दुर्गा दुर्गा देवी दुर्गा भवानी दुर्गा दुर्गा देवी दुर्गा भवानी काली काली महाकाली कपालिनी काली महाकाली कपालिनी मंगल गौरी माता महेश्वरी मंगल गौरी माता महेश्वरी राज राजेश्वरी लक्ष्मी नारायणी राज राजेश्वरी लक्ष्मी नारायणी राज राजेश्वरी लक्ष्मी नारायणी राज राजेश्वरी लक्ष्मी नारायणी काली काली महाकाली कपालिनी राधा के नटवर लाल कन्हैया के नटवर लाल कन्हैया राधा के नटवर लाल कन्हैया के नटवर लाल कन्हैया गोकुल बाला गोपरिपाला गोपरिपाला गोकुल बाला गोपरिपाला गोकुल बाला गोपरिपाला राधा के नटवर लाल कन्हैया राधा के नटवर लाल कन्हैया नंद कुमारा रास विलोला नंद कुमारा रास विलोला नंद कुमारा रास विलोला नंद कुमारा रास विलोला मीरा के प्रभु नंदलाल कन्हैया 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 राधा के नटवर लाल कन्हैया राधा के नटवर लाल कन्हैया गोकुल बाला गोपरिपाला गोकुल बाला गोपरिपाला राधा के नटवर लाल कन्हैया राधा के नटवर लाल कन्हैया नंद कुमारा रास विलोला नंद कुमारा रास विलोला हे रास विलोला रास विलोला हे रास विलोला रास विलोला
नंदलाल कन्हैया। मीरा के प्रभु नंदलाल कन्हैया। मीरा के प्रभु नंदलाल कन्हैया। मीरा के प्रभु नंदलाल कन्हैया। राधा के नटवर लाल कन्हैया। नीलकंठ महादेव गौरी वंदना। नीलकंठ महादेव गौरी वंदना। नीलकंठ महादेव गौरी वंदना। नीलकंठ महादेव गौरी वंदना। चंद्रचूड दयानाथ नंदी वाहना। चंद्रचूड दयानाथ नंदी वाहना। चंद्रचूड दयानाथ नंदी वाहना। चंद्रचूड दयानाथ नंदी वाहना। सांब शिवा शूलधारी नागभूषणा। सांब शिवा शूलधारी नागभूषणा। सांब शिवा शूलधारी नागभूषणा। सांब शिवा शूलधारी नागभूषणा। फालनेत्र उमाकांत परम पावना। फालनेत्र उमाकांत परम पावना। फालनेत्र उमाकांत परम पावना। फालनेत्र उमाकांत परम पावना। नीलकंठ महादेव गौरी वंदना। नीलकंठ महादेव गौरी वंदना। चंद्रचूड दयानाथ नंदी वाहना। चंद्रचूड दयानाथ नंदी वाहना। सांब शिवा शूलधारी नागभूषणा। सांब शिवा शूलधारी नागभूषणा। फालनेत्र उमाकांत परम पावना। फालनेत्र उमाकांत परम पावना। फालनेत्र उमाकांत परम पावना। फालनेत्र उमाकांत परम पावना। नीलकंठ महादेव गौरी वंदना। राम कहो साई राम कहो, श्याम कहो घन श्याम कहो। राम कहो साई राम कहो, श्याम कहो घन श्याम कहो। राम कहो साई राम कहो, श्याम कहो घन श्याम कहो। राम कहो साई राम कहो, श्याम कहो घन श्याम कहो। यीशु कहो जोराश कहो, एक विदाता साई 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 कहो। मंदिर में कभी मस्जिद में, मंदिर में कभी मस्जिद में, मंदिर में कभी मस्जिद में, मंदिर में कभी मस्जिद में।
भगवान। अपना हृदय में साई भगवान। अपना हृदय में साई भगवान। राम कहो साई राम कहो, श्याम कहो घन श्याम कहो। राम कहो साई राम कहो, श्याम कहो घन श्याम कहो। यीशु कहो जोराश कहो, एक विधाता साई कहो। यीशु कहो जोराश कहो, एक विधाता साई कहो। मंदिर में कभी मस्जिद में, अपना हृदय में साई भगवान। अपना हृदय में साई भगवान। राम कहो साई राम कहो, श्याम कहो घन श्याम कहो। जय कौसल्यानंदन राम, परमानंद आनंद राम। 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 जय शिरडीश परतीश राम, जय प्रशांति साईश 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 राम। जय कौसल्यानंदन राम, परमानंद आनंद राम। जय कौसल्यानंदन राम, परमानंद आनंद राम। मंगल पावन नाम, जय सुंदर वैदेही 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 राम। जय सुंदर साईश राम। जय सुंदर साईश राम। जय सुंदर साईश राम। जय सुंदर साईश राम। जय कौसल्यानंदन राम, परमानंद आनंद राम। जय कौसल्यानंदन राम, परमानंद आनंद राम। जय शिरडीश परतीश राम, जय प्रशांति साईश राम। जय शिरडीश परतीश राम, जय
जय प्रशान्ति साईशरा जय कौसल्यानन्दन राम परमानन्द आनन्द राम जय कौसल्यानन्दन राम परमानन्द आनन्द राम मङ्गल पावन नाम जय सुन्दर वैदेहि राम मंगल पावन नाम जय सुंदर वैदेहि राम जय सुन्दर साईशरा जय सुंदर साईशरा जय सुन्दर साईशरा जय सुंदर साईशरा जय कौसल्यानन्दन राम परमानन्द आनन्द राम राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की 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 अंजनी पुत्र बल भीमा आंजनेया बल भीमा अंजनी पुत्र बल भीमा आंजनेय बल भीमा अंजनी पुत्र बल भीमा आंजनेया बल भीमा अंजनी पुत्र बल भीमा आंजनेय बल भीमा बल भीम बल भीम बल भीम बल भीम बल भीम बल भीम बल भीमा बल भीम बल भीम बल भीम बल भीम बल भीम बल भीम बल भीमा वायु कुमारा बल भीमा वानर वीरा 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 बल भीमा बल भीम बल भीम बल भीम बल भीम बल भीम बल भीम बल भीमा बल भीम बल भीम बल भीम बल भीम बल भीम बल भीम बल भीमा परति पुरीशा साई रामा पावन पुरुषा साई रामा 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 साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम साई रामा साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम साई रामा साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम साई रामा साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम साई रामा राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की अंजनी पुत्र बल भीमा आंजनेया बल भीमा अंजनी पुत्र बल भीमा आंजनेय बल भीमा बल भीम बल भीम बल भीम बल भीम बल भीम बल भीम बल भीमा बल भीम बल भीम बल भीम बल भीम बल भीम बल भीम बल भीमा वायु कुमारा बल भीमा वानर वीरा बल भीमा वायु कुमारा बल भीमा वानर वीरा बल भीमा बल भीम बल भीम बल भीम बल भीम बल भीम बल भीम बल भीमा बल भीम बल भीम बल भीम बल भीम बल भीम बल भीम बल भीमा परति पुरीशा साई रामा पावन पुरुषा साई रामा परति पुरीशा साई रामा पावन पुरुषा साई रामा साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम साई रामा साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम साई रामा साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम साई रामा साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम साई रामा राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की रंग विठला पांडुरंग विठला रंग विठला पांडुरंग विठला श्रीरमणी
ಹೃದಯಾಂತರಂಗ ಶ್ರೀರಮಣಿ ಹೃದಯಾಂತರಂಗ ಮಂಗಳಕರ ಕರುಣಾಂತರಂಗ ಮಂಗಳಕರ ಕರುಣಾಂತರಂಗ ಆಶ್ರಿತ ದೀನ ಜನಾವನರಂಗ ಆಶ್ರಿತ ದೀನ ಜನಾವನರಂಗ ಜಗದೋಸಾರ ಹರಿವಿಠಲ ರಂಗ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ರಂಗ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ श्रीनारायण पुरुषोत्तम गुरु सेतवतो कंठ विनायक सविता पावक सविता पावक शक्ति यशोदा प्रभुतो रुद्र विष्णु तो राम कृष्ण तो रहे बटाओ रहे बटाओ वासुदेव ईश्वरो बलो चिदानंद हरिदो अद्वितीय तो अकाल निर्भय आत्मलिंग शिवदो आत्मलिंग शिवदो आत्मलिंग शिवदो असतो मा सत्यमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया Om Shri Sai Ram. In order to remember Bhagavan's teachings continuously and to become worthy instruments of our Divine Master, every member has to engage in sadhana, a spiritual discipline which has to be merged with his or her day-to-day life, and every member is encouraged to make his or her family as a unit for such sadhana. Thus, with the view to qualify to become a true member of the organization, the following guidelines are to be followed. Number 1, daily meditation and prayer. Number 2, group devotional singing or prayer with family members once a week. Number 3,
participation in Sai spiritual education by children of the family. Number 4, participation in community service work and other programs of the organization. Number 5, regular attendance at the center's devotional meetings. Number 6, regular study of Sri Satya Sai Baba literature. Number 7, the use of soft, loving speech with everyone. Number 8, not speaking ill of others, especially in their absence. And number 9, Narayana Seva. Practice placing a ceiling on desires. Consciously and continuously strive to eliminate the tendency to waste time, money, food, and energy, and utilize the savings for service to mankind. Jai Sai Ram. My humble pranams at the lotus feet of Swami and a loving Sai Ram to all our brothers, sisters, respected elders, and children tuned in tonight. We pray that with Swami's grace, you and your families are healthy, happy, and peaceful. Swami says, use the mind to cleanse the feelings, impulses, attitudes, tendencies, and levels of consciousness. Let it not accumulate dirt from the outer world and deposit them within itself. If it is attached to work, the consequences of work get attached to it. Unattached work is the purest. It does not encumber the mind with elation or disappointment. I did it. This is mine. These are the two fangs that make the individual poisonous. Pull out the fangs. The snake can be handled and played with as a pet. The Sri Satya Sai organizations must be vigilant to see that egoism and the sense of personal possession, pride, or achievement do not invade them. That is the goal to be kept in view. When an organization is started, it has to lay down for itself certain rules and regulations. But our rules are of a different nature altogether. Our rules emphasize that members must first practice what they stand for. Whatever you desire others to do, you must first put into daily practice sincerely and with steadfastness. You must do bhajan regularly and systematically before you advise others about the efficacy of bhajans. When you want to be honored by others, you must learn to honor them first. Divine Discourse, April 21st, 1967. The announcements for this week are as follows. Gayatri Mantra chanting. We humbly ask all devotees to continue chanting the Gayatri Mantra 3 times a day. And if possible, let us all chant together at 7 p.m. 108 times. Chanting the Gayatri Mantra is one of the most potent forms of seva we can do, as it is selfless and will go to wherever it is needed, unbeknown to us. Prayers for healing. A WhatsApp group has been created to allow devotees to pray for those in need of healing or upliftment. If you have a family member, friend, or know of any person who needs prayer, please contact any of the National Devotional Coordinators to post the request on this group. Wheelchair Reuse Program. The National Go Green team would like to thank all devotees that have supported the Wheelchair Reuse Program. With Swami's grace, we have now loaned out 96 wheelchairs at no cost to needy recipients. There is still a dire need for wheelchairs, as sadly the demand is becoming greater than our supply. Devotees are encouraged to continue to support this program by donating their second-hand or new wheelchairs, spreading Swami's divine love to those in need. Please do reach out to your regional Go Green champion for more details. 2026 Pilgrimage Pre-Registration.
we are delighted to announce that pre-registration for the Sri Satya Sai Global Council South Africa pilgrimage to Prashanti Nilayam is now open. This pilgrimage will take place from the 12th to the 16th of July 2026. Devotees wishing to attend are kindly requested to complete the pre-registration form that has been shared with the National Communications. This sacred 5-day pilgrimage will include 3 days of special seating and programs inside Kulwant Hall, subject to confirmation from Prashanti Nilayam. Sri Satya Sai School, Lenasia. The Satya Sai School of Lenasia is our love offering to Bhagavan. Devotees are reminded to please download the Woolworths app and link the Satya Sai School of Lenasia to your rewards profile. Should you wish to make a monthly debit order or a once-off love offering to the school, please do reach out to your respective regional president. This evening, we continue with a talk by Dr. Shrikant Sola on the causes of suffering and how to view suffering as a gateway to deeper wisdom and personal transformation. The focus is on how to navigate hardship with dignity, purpose, and even style, suggesting that the way we handle suffering matters just as much as the suffering itself. In the previous segments, Dr. Sola discussed the two common forms of suffering, namely, seeking happiness from the external world through our attachments to family, friends, places, and objects, and following our thoughts and desires. This evening, he describes the main cause of suffering, which is the belief that we are this body. We pray that you have a blessed and peaceful week ahead. Jai Sai Ram. Okay, now the third point is the real reason why we suffer. Ready for this? Okay, we talked about the external things, we talked about the internal things. It always goes in this direction. Your sadhana always goes in this direction. First, there's outer sadhana. You're doing puja, worship, seva, this thing, that thing. Then you're doing inner sadhana. You're looking at yourself, examining my thoughts, my feelings, my attachments. Why did this thing come up suddenly after so long? Oh, I need to work on it, right? That's inner sadhana. And then you go to the last stage where you say, who am I? Who is the self? What is the self? What is the Atma? What is the Brahman? That's the last stage. When I meet you, when we meet, what's the first question I ask you? I don't ask, how are you doing, right? How is your sadhana, right? And when you tell me, Swami, not so good. Okay. Then, or sometimes you say, I'm doing this type of meditation, I'm doing this type of kriya, I'm doing this type of whatever. Okay, good. Good, you're doing something. But when I feel the happiest is when someone says, I've been working really hard on self-inquiry, right? Swami says sadhana is 90% inquiry, right? 10% is all this japa and dhyana and all those things. 90% is inquiry. And so coming to the real reason why we suffer. Why do we suffer? What do you think? More than that. Negative thoughts? Okay, more than that. Who has those thoughts? The negative thoughts. Identity. I am out of that oneness. Out of that oneness, going out of that oneness. That one thought, underneath all your other thoughts, it's such a quiet thought, you don't even realize it's there. There's just one thought that underlies every single thought, every single experience, and that one thought is, I am the body, right? There will be no cure for suffering unless you let go of this thought. Okay? I will guarantee it. As long as you have this thought, I am the body, you will suffer. There's no escape. Okay? And so the real sadhana is to let go of this thought, to let go of this belief. It's been tormenting you for, what does Swami say? How many births does Swami say it takes to want to know the Brahma Vidya?
1 million births, right? He says 100,000 births to be able to say Sai Ram, the name of God. 1 million births to be able to want to know the Brahma Vidya. Yes? So for 1 million births, you've been having this false belief, this fake belief, that I am the body. And because of that one thought, you got stuck. And because of that, you suffer. And nothing will help you until you get rid of this thought. Okay, so let's do a meditation today. Let's sit up straight. This is going to be in 3 parts. Okay? And we're just going to cover external, internal, and then the self, just like in the same order that I went through. Okay? And what I'd like you to do in the first part is to ask Swami to show you what external things do you need to not let go of or push away, but what external things are controlling your or causing you to suffer. Okay? What external things, friends, family, whatever, is causing you to suffer. So just close your eyes. Take a deep breath in. Let go of all stress and tension. Another deep breath in. Breathe out. Let go of all stress and tension. Just relax. You know, when you're talking with Swami, really just be relaxed. And then ask Swami to show you, in whatever way is appropriate for you, what is it in the external world that is causing you to suffer? And how can you be free? What attachments, what desires, how can you be free? If you're not sure what Swami is saying, ask him for clarification. Ask him to show you and be quiet. Okay, now let's go to the next stage. Ask Swami to show you what desires do you have that are causing you to suffer, and how can you be free of those desires so that you don't follow them anymore. Make a note of this internally. And then in the last question to Swami, ask Swami to show you, how do you free yourself of this erroneous thought that I am the body? Okay, good. Very good. Let's come back to the present moment. You all did very well. So we have covered three causes of suffering. There are probably many more that you can think of. But in these three causes, we talked about how we allow things external to us, whether they're people, places, or things, to cause suffering. And that is foolishness, because why give away your happiness to someone or something else? Then we talked about our internal state, our mind, our thoughts, our desires, how we foolishly follow our desires. And that leads us down another trail of suffering, and how we can practice do practice cutting ties, but we can practice the Sealing on Desires program to gradually loosen the stranglehold that these desires have on us. And the third and the most important thing is that you will not be free from suffering until you let go of this one thought that I am the body. Okay?
All right. So questions on this? Because I know it's not something we talk about. People don't like to talk about suffering. No, we like to talk about happy things. Swami stories, Swami's funny thing that he did like this. But we need to discuss this. Yeah. So questions, doubts on this? Yes. Just use the mic. Well, you talked about self-love and selfish. How can I differentiate that? If I be like a self-love, people start telling that you're so selfish. So how can I overcome this kind of attitude? See, self-love allows you to stand up for yourself as long as you do it in oneness. Okay? I'm not different from you. You and I are one and the same, but I won't allow myself to be abused or taken advantage of. Okay? That is self-love. I'm not being selfish. I'm saying that I respect myself too much to allow you to abuse me, to mistreat me, to disrespect me. That's an example. Okay? But what I'm getting is that there's still an undercurrent in your thoughts of a desire to please other people. Yeah? And that's what you need to look at. It's not about loving yourself. It's that you have this desire to please others. And that needs to go. Why do we please others? Because we feel that when we please others, we will be happy. That in them feeling happy, we put our happiness on the happiness of others, right? And that is not correct. Our happiness is independent of others. Our happiness is here inside. Once Swami asked us, he said, do you know, this was a time where Swami was always calling us, always talking to us. It was like, if we go, it was what we call our golden age. And every day I just think about that and I get tears in my eyes. Swami would talk to us so much, call us so much, interact with us so much. And then one day he called us and says, do you know why you two have so much divine grace? And we just put our hands together and did like this. And Swami said, because no matter what happens, you are always happy. So you see the difference? Yeah? So the question is not about self-love versus selfish love. The question is, why are you allowing others to determine your happiness? It's a waste. Remember what Swami said. Creation is designed in such a way that nothing outside of yourself will ever bring you satisfaction, not even your own Swami. Yeah. One more last question. As you mentioned, we are not the body, so we are attached to our fitness or ourselves, the height, weight, whatever it is, frame, name, desire. How can we detach from that? It is very hard. In Vedam also they talk about we are not the body, we are the Atma. So it is very difficult for us, we recognize the other person, oh, that person made that, this person made that. Stop looking at social media. Really. We're getting fed this slop, like what you give to pigs. And it's getting worse and worse every day, the amount of trash that is coming through. And we're being fed images that other people are creating, and it may not necessarily be the right thing. Now, having said that, sure, there are a lot of good things on social media. Maybe you have hobbies. Maybe it helps you in something you'd like to learn. Maybe there's some information that helps you in your life. Whatever, there's plenty of good things. I'm not saying that everything is bad. But what's happening is that we're being overwhelmed by this deluge of information and often misinformation, and it's just causing our brains to rot. Follow-up question for this slide. See, we have 5 koshas. One is Annamaya, Pranamaya, Manomaya, Anandamaya, Vijnanamaya. First, we have to work on our body so that our senses get control. Then Pranamaya, then Manomaya, then Vijnanamaya, then Anandamaya. So I feel contradict when we tell we are not the body. Is it I am assuming in the negative way, or how I should overcome that? You are God having a dream experience in a dream body, in a dream creation. That's all. Okay? Just repeat that to yourself every day, all day long if you want. I am God having a dream experience in a dream body,
in a dream creation. That's all. Yeah. Wonderful. So no more suffering? Yes? And if you do suffer, you know what you need to do. Suffer in style. In style. Suffer in style. Yes. Okay. Sayonara, everyone. जय जगदीश हरि स्वामी सत्य साई हरि भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक भक्ति महेश्वर ओम जय जगदीश हरि शिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपति स्वामी सर्वा प्राणपति आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका अवतारव ओम जय जगदीश हरि माता पिता गुरुदैवं पर्यन्तयुनीवे स्वामी पर्यन्तयुनीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्र शरण ओम जय जगदीश हरि ओंकार रूप शिव साई महादेव सत्य साई महादेव मंगल आरती अंधुको मंगल आरती अंधुको मंगल गिरिधारी ओम जय जगदीश हरि नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु ओम शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। परमं पवित्रं बाबा विभूति
लीला विभूतिं परमार्थमिष्टार्थं मोक्षप्रदानं पापाविभूतिं हृदयमाश्रयामि परमं पवित्रं भावविभूतिं परमं विचित्रं लीलाविभूतिं परमार्थमिष्टार्थं मोक्षप्रदानं भावविभूतिं हृदयमाश्रयामि परमं पवित्रं भावविभूतिं परमं विचित्रं लीलाविभूतिं परमार्थमिष्टार्थं मोक्षप्रदानं भावविभूतिं हृदयमाश्रयामि. ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्. 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 ॐ साईश्वराय विद्महे
सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात् ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्